ख्वाजा साहब, आप बहस तो कर चुके हैं, आप बेहतर समझेंगे कि अटॉर्नी जनरल के को सुन लें, फिर आप उनका भी राइट, आप अपना आपका यकीनन जवाब देने का हक महफूज रखेंगे तो आप उस वक्त कर सकते हैं। तो मेरे और आपने दलाइल लिख के भी दे दिए हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी फरमाइए। विद माय हेल्प ऑफ माय टू ग्रैंडसन्स, ये देखिए, ये बात बिल्कुल गैर जरूरी थी। नहीं सॉरी ख्वाजा साहब, मैं यहीं आपको टोक दूंगा। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा ऐसी बातें। मैंने आपको अभी गुजारिश की है, नहीं ये बातें ना करें। बाय द हेल्प ऑफ माय ग्रैंडसन्स, ये क्या बात है? I was asked 20 questions. I have replied. जी हमने देख लिए हैं। I replied them in writing. If the Attorney General is going to reply to them, then I reserve my right to. जी हम यही आपको कह रहे हैं कि आपको यकीनन मौका देंगे। And I have done that in my CMA 8252 of 2023. जी, तो अगर किसी और को कोई इस पे एतराज़ नहीं है तो अटॉर्नी जनरल आगाज़ कर सकते हैं। एक शख्स एक वक्त में आके स्पीकर के सामने बात करें, दूसरे शख्स जरा जगह दे दें। योर ऑनर, मैं कार्रवाई शुरू होने से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ। माइक में बात कीजिए। योर ऑनर, मैं कार्रवाई शुरू होने से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ। आई हैव चैलेंज दी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और जो बिल चैलेंज हुआ है इन दोनों को मैं अलहदा समझता हूँ, क्योंकि बिल जो है उसको चैलेंज करना। अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं, आपको इतराज़ है अटॉर्नी जनरल आगाज़ करें बात का, हाँ या ना? सवाल आपने नहीं सुना था। हाँ सर वो कर लें तो फिर बस ठीक है, यही पूछा ना। अभी और आप बहस ना कीजिए ना। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको इतराज़ है उनके बहस करने से, तो फिर हम आपको पहले सुन लेते हैं। नहीं योर, वन लाइन में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बिल को अगर उसको अलहदा सुन लिया, दोबारा आपने बात शुरू कर दी वही। My lord, if I may, my lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view. I think then he can. आप किधर से हैं? My lord, I am for 19. My lord, I was not here last time. I was abroad, so. तो आपने इसको अहमियत नहीं दी? No, my lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my lord. आप किसके लिए हैं? My lord, petitions. नाम बताइए किसके लिए? Mudassir Hassan, my lord. कौन है मुदस्सिर हसन? He is a lawyer, my lord. He is a petitioner. किधर है, दिखाएं उनको। My lord, today he has, my lord, called to Peshawar. He has a case in Peshawar. हाँ, तो देखिए ये तो अहमियत आप दे रहे हैं। एक दिन वकील नहीं है तो दूसरे दिन वो पिटिशनर, इनको जितना शौक इस केस का नहीं है। My lord, because this was fixed. आप कितना वक्त लेंगे? My lord, maybe with your lordship's discretion, half an hour to 30 to 60 minutes, my lord. नहीं, नहीं, मुख्तसर, हाफ एन आवर वाले इतने लंबे नहीं, मुख्तसर बात कर लें तो कर लें। अच्छा, आप करना चाहते हैं, और पिटिशनर की तरफ से कौन है? Of the same submission, I have a petition number 33. अगर आप प्लीज बता दें, आप पहले सुनना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को? If I am allowed to argue first, my lord. अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। चलें, आ जाइए आप जी, चौधरी साहब बताइए। CP20 सर। नहीं, आप पहले बहस करना चाहते हैं? अच्छा, आप किसके लिए, किसके लिए हैं? आप किसके लिए हैं? न्याजुल्लाह न्याजी पेटिशनर है, मौजूद है। कौन है? वकील हैं? He is an advocate and former president of the Islamabad High Court. चलो, आप सीनियर हैं, आप बताइए आपका केस नंबर क्या है? CP20 में। CP20। I've already filed concise statement, my lord, and ठीक, concise statement. 20 एक से इनकी निकालने पिटिशन। Concise statement is 8279, my lord. CP20. ये जी, Lord, if I'm permitted, my lord, if I may, please. Lord, I'll just be reading the Act 17, my lord, before I submit my
चौधरी साहब, अब आप पूरा ना पढ़िए, हम पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं। उसका अगर आप एक शिक पढ़ना चाहें, उस पर बहस करना चाहें तो कर मैं दीजिए। उसी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो ओपनिंग पैरा है, अगर इजाज़त दे, क्योंकि वो क्रक्स है उस सारे इशू का जो बुनियादी तौर पे इस एक्ट का हिस्सा है। तो आई वुड, मे आई मिनोड, बिस्मिल्लाह कर लीजिए, शुरू कीजिए। Whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. And whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process, Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law, and Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence. And Islam guarantees right to appeal, therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court, my respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose, maybe for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I'm permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, Let's not introduce words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it, that is my impression. that is my impression. So the law doesn't say this. Lord. So, all the sections which are part of this Act 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this Section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 rules, Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal the framework, I must say,